मार डाला रे। सो गाइस, आज हमारा लास्ट एग्जाम है। Hello. Yes, Aryaman Banerjee, I am removing you, okay? Aryaman. No, you are removed now. Okay, he is removed. I am not going to accept this kind of thing. Okay, he will not be able to join anymore. Okay. So he is going to repeat this experiment. All right. So let's continue. So 100% लेगा. अगर आपने कुछ नहीं किया ना, it will try to get 25 meters. But there is a person here. Who is this person? It is you. It is the drive engineer. ठीक है, ये ड्राइव इंजीनियर जाने नहीं देगा मोटर को 25 पे. क्यों नहीं जाने देगा? बिकॉज उसका जो वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग जल जाएगा. उसको पता है मेरा जो वाइंडिंग है, अगर 25 एम्पियर करंट जाएगा तो मेरा वाइंडिंग जल जाएगा. तो क्या करेगा ये पर्सन? दिस ड्राइव इंजीनियर विल लिमिट द करंट. वो जाने ही नहीं देगा करंट. It will limit the current to 20 amperes. It is not the motor who is doing it. It is the drive engineer. This drive engineer, what does it look like? Is it the motor? No. The drive engineer is the power converter. Okay, so if you are having a DC motor and you want to control the speed, okay. So this is the motor, this is the donkey, this is the person. यहाँ पर तुम ड्यूटी रेशियो देते हो और उसका दिमाग यहाँ पर होता है कंट्रोलर पे. यहाँ पर फीडबैक लेता है वो आइए का. दिस इज द फीडबैक. यहाँ पर आपका एक करंट सेंसर है, ठीक है. The current sensor is there that gets a feedback to the controller. Controller decides according to that the duty ratio. It provides it to the power converter. यहाँ पर आपका V source है, VDC. अगर आपका power converter नहीं होगा, this is connected to the load. Okay. अगर आपका load 25 Newton meters है तो this will try to draw 25 amperes. But it is the power converter that will limit it. It will limit to नहीं, तुम नहीं ले सकते हो. तुम सिर्फ 20 एम्पियर ही ले सकते हो. अगर 20 एम्पियर ही ले सकते हो तो व्हाट विल हैपन? लोड तो 25 ही है, ठीक है, और मोटर आपका जो है दैट इज 20 न्यूटन मीटर्स. सो दिस इक्वेशन विल बी नाउ कमिंग इनटू द पिक्चर. दिस इज 25, सो डेफिनेटली देयर विल बी डीएक्सेलरेशन. सो लोड विल डिक्रीज द स्पीड व्हाटएवर इट इज. It will decrease the speed. Now, if the speed, the load is not dependent on the speed. Sir, then for a constant voltage, motor trains to draw its maximum current. Arey, that is what I'm saying. This is power converter, na? This is controlling the voltage. How is the voltage being changed? The voltage is being changed by a power converter. For example, a 2-quadrant chopper is controlling this voltage and it is making sure that it does not draw more than the rated current. It is the power converter. Sir? Yes. सर मतलब पावर कन्वर्टर की जगह एक छोटा सा रियोस्टेट या रेजिस्टेंस भी अगर हम लगाते हैं तो भी तो काम चल जाए. नहीं चलेगा. कैसे चलेगा काम? सर मतलब लिमिट, इट विल लिमिट. ठीक है, अब रियोस्टेट को कंट्रोल कौन करेगा? कोई तो करेगा ना कंट्रोल उसको भी. You are right. If you increase the resistance of the rheostat, Okay, then sir. the Power converter is an automated system. rheostat को कंट्रोल कौन कर रहा है? rheostat को तो कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना. कि अगर तुम छोड़ दोगे तो अपने आप रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है क्या rheostat का? हाँ नहीं सर, मतलब ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए पावर कन्वर्टर यूज. Yes, yes. So you, whenever you are having a DC drive, आपका एक सोर्स होता है, this is the source. Then you have a converter. Then you have the motor. These three things
This is the drive. So that is what I said. So when you say that we are having an electric drive, by default you need to have a power converter उसमें. अगर power converter नहीं है तो that is not a drive. You can use directly DC, that is fine, but it is for very simple application. मतलब it should not be very. You should know that the load will never increase in the sense that it will never go beyond a particular value. ठीक है, लोड के बारे में आपको सब कुछ पता है अगर, तो ठीक है, आप पावर कन्वर्टर हटा दो, डायरेक्टली मोटर लगा दो, डीसी मोटर लगा दो। आप आपका ये है पीवी सेल है, पीवीआरए, ठीक है। यहाँ पर डीसी आएगा, डीसी पावर आएगा, डीसी वोल्टेज। यहाँ पर आप डीसी मोटर लगा दो, चलेगा वो? चलेगा नहीं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बट आपका जो लोड है वो अगर वेरिएबल है ना, तो ये दिस विल नॉट बी द केस देन। Hello, sir. Yes, tell me. Sir, actually, some fake people has joined the Zoom call and using my and Apmanda's name as fake chats. I am not going through that chat. I know that that means people have joined, but how to identify them? You tell me. Again, I have to switch to Google. There also I am facing the same problem. Sir, I think you can kick them out of from this class. If I'll be, last time also I have done, but by mistake I have done it. The right people I have removed. Yeah. That is the problem. I am unable to know that one, who is the Yeah. right one, who is the wrong one. So Sir, just I ignore think the we have to tolerate this thing for more 2 to 3 weeks. After that, we have offline classes. But even if you are in offline classes, if anybody is giving the option for online, then I have to conduct in blended mode in the class itself. You can turn on the chat. सर ब्लेंडेड मोड का मतलब हम लोग तो ऑफलाइन क्लास में रहेंगे पर आपका वीडियो ऑन रहेगा जिन Video on स्टूडेंट रहेगा. ऑनलाइन पे है. Those who will be there in online, I have to teach them there from the class itself by using same as either Zoom or using Google Meet. Anyway, someone is asking something else. So I guess this one also fake. I do not know. I am not going through that chat. Anyway, And sir attend. so you'll get A1, A2 minus A0, A3 divided by A1. That will be equals to, let it be B1. Right? This has to be given under this first column that you have to write down. Then you have to go for the second column. Okay. So what will be that one? How to calculate that second column value? That will be given as A1, A4 minus A0, A5. You can write it A1, A4 minus A0, A5 divided by A1. Which will be equals to B2. Tomorrow I will take the class in Google Classroom. Okay. So A1, A4 minus A0, A5 divided by A1, which will be equals to B2. And so on so. You have to continue so on so. Then you have to find out S to the power n minus 3. Fine. So if you'll be going for S to the power n minus 3, so what you will be doing? You have to consider. Now you can, that means you can take the next column value, you can take it as
B3. Then you can take B4, B5, and so on. Then s to the power n minus 3, it has to be taken this row and just the row above this one. Means you have to consider A1, A3, A5, A7, A9, and B1, B2, B3, B4, B5, and so on. So these two rows has to be considered. So what will be the value? First entry for this column, B1, A3. Means I can consider this one like this. I have to take these two, B1, A3 divided by this. So B1, A3 minus B2, A1 divided by B1. Let it be equals to C1. Fine. The next one, similarly, you can find out B1, A5 minus B2, A3 divided by B1. That will be equals to C2. You can keep it under the second column. Similarly, on the third column, it will be C3. On the fourth column, C4, and so on. So you have to continue up. हाय दैया मार डाला रे सो गाइस, आज हमारा लास्ट एग्जाम है, तो इसलिए थोड़ा पागलपंती कर रहे थे, तो अभी ज्वाइन कर लेते हैं क्लासरूम पे और बैचमेट के साथ, सॉरी नॉट क्लासरूम, गूगल मीट, और बैचमेट के साथ थोड़ा मजाक करते थे। এই তুজা, হ্যালো, হ্যালো, বল কেমন আছিস? কেমন আর থাকবো, পরীক্ষা চলছে ভাই। ওটাই তো বোঝা যাচ্ছে না কি করা যাবে। যে আমি খুশিও আছি, দুঃখিতও আছি। কেন দুঃখিত কেন? কেমন পরীক্ষা হবে, আর খুশি হচ্ছে আজ লাস্ট পরীক্ষা, তারপর গেম খেলা হবে। এই আজ লাস্ট পরীক্ষা, একবার তুই স্যারকে একটা গান শুনিয়ে দে না ক্লাসরুমের মধ্যে। কিছু বলবে না, পরীক্ষাটা শেষ করে মাইক অন করে ইউটিউব চ্যানেলে গান বাজিয়ে দে, তোর নিজের গানগুলো। একদম না, একদম না, বেস্ট পপুলার সংটা। একদম না। না না, করতে পারিস, লাস্ট পরীক্ষা তো, এটা তো আজ আমাদের লাস্ট অনলাইন ক্লাস। অনলাইন ক্লাসও না পরীক্ষা। স্টিল না না, কি আর করবে, অনলাইন ক্লাস থেকে সাসপেন্ড করলে তো অফলাইনে ক্লাস জয়েনই করছিস। হলামই বা অনলাইনে সাসপেন্ড, 19 তারিখ থেকে তো অফলাইন। নট মাই থিং। আছে অনেক লোকজন যারা করে এরকম, বাট নট মাই থিং। আর প্রিপারেশন কেমন? মোটামুটি রে, ফাতরামো করে যাচ্ছে। আমি কি পড়াশোনা করি দেখে কি মনে হয়? সারাক্ষণ ছ্যাবলামো করেই কাটিয়ে দিই। পড়াশোনা করিস বলেই মনে হয়। না না, অল্প 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 অল্প। ওই যেরকম তুই যখন আগে ছিলিস না ম্যাথেও, তো তোর নেম ছিল না ওই বিষ্ণু প্রকাশ স্যারের ক্লাসে? हाँ विष्णु प्रकाश सर ने एक बार बोला था, आई विल मार्क यू एब्सेंट फॉर द नेक्स्ट 7 days। I was not responding. अच्छा चल, everybody is joining हाँ, now. परे কথা হবে। Oh my God!
5 can leave, 3 4 can leave. Okay, sir. Thank you, sir.